मु रंजन पुणी थे स्वागत करी आमको आम यूट्यूब चैनल ओडिया स्टडी रूम को। सो पिला माने आमे पूर्व वीडियो रे तुम दशम श्रेणी इंग्लिश बहिर जो डिटेल टेक्स्ट रही एट द हाई स्कूल यार क्वेश्चन आंसर पार्ट 1 डिस्कस करथिले, अर्थात 52टा क्वेश्चन तुम थिला जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ताको आमे आलोचना करथिले। या पर किछि ग्रामेटिकल क्वेश्चन तुम रही जोड़ा आज आमे वीडियो पार्ट 2 रे आलोचना करिबा। सो प्रथम वीडियो को जो तुम मैंने देखिना ताले लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि, बेसिक कांसेप्ट भी अच्छी सबुड़ा तुम मैंने जाकि देखि परिबो प्लेलिस्ट रे डिटेल रे तुमको दिया है। ठीक अछि, तो आज वीडियो आरंभ करिबा। ता पूर्व चैनल जदि नुआ छ ताले सब्सक्राइब कर नबो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर नबो। हमर चैनल ना होछि कोन ओडिया स्टडी रूम, सर्च करके अन्य मानको मध्ये जणाई देबो। ता छडा ए पीडीएफ को डाउनलोड करिया पहिले हमर जो ओडिया स्टडी गाइड ना रे गोटे एप्लीकेशन अछि, सेही ओडिया स्टडी गाइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिबो प्ले स्टोर रु। तार लिंक मध्ये मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देई देछि। ओके, स्टार्ट करिबा। लेट्स सम अप जो देछि। ओके, कोन रहिछि देखो क्वेश्चन। द प्रेजेंट टेक्स्ट एट द हाई स्कूल is built up of a main idea and supporting ideas. The text title itself is the main theme or idea. The facts, information presented in the paragraph from the contents or sub-themes or supporting ideas given below is the table which shows a well neat structure of the text. ठीक है, मुझे तुम कही दूसरी ए भितर आम कौन पढ़िले ना प्रेजेंट टेक्स्ट जोड़ा आम पढ़ुं एट द हाई स्कूल सेटा गोटे मेन आइडिया को लेकिन बा किसी सपोर्टिंग आइडिया को मिसेकी तैयारी होईची। आ जो टेक्स्ट टाइटल एट द हाई स्कूल ये हूँ गोटे मेन थीम बा मेन आइडिया यही जो पाठर एथि जो फैक्ट गुड़ा कही बा इंफॉर्मेशन गुड़ाक दिखाई प्रत्येक पैराग्राफ रे जो कंटेंट रु हो बा सब थीम रु हो बा सपोर्टिंग आइडिया रु हो सब गुड़ाक दिखाई। गिवन बिलो इज ए टेबल, तले गोटे टेबल दिखाई व्हिच शोस ए वेल नीट स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट। किछि स्ट्रक्चर दिखाई जो टेक्स्ट रो किछि फैक्ट दिखाई इंफॉर्मेशन जोड़ा कि तमरा मिसिंग अछि से टेबल रु। कंप्लीट द टेबल यूजिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चूजिंग फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। सम पैराग्राफ्स हैव मोर देन वन थीम। कोन कहूची ना एठी तुमको गोटे देखो दिखाई गोटे टेबल जोटी तुमको पैराग्राफ गुडा को दिखाई पारा 1 पारा 2 पारा 3 पारा 7 पर्यंत दिखाई। से कहे पैराग्राफ रो जो मेन आइडिया बा कंटेंट कौन अच्छी, मेन कंटेंट मेन इन फैक्ट बा इंफॉर्मेशन कौन अच्छी सेटा प्रोवाइड करो जोटा कि मिसिंग अच्छी। गोटे रु अधिक मध्य तुम रही थाई पारे मेन आइडिया बा इंफॉर्मेशन, ताले से गुडाकर तुमको गोटे हेल्प बॉक्स दिखाई से बॉक्स रु बाहर करके लेख। तो डायरेक्ट आंसर आम देखा एटी हेल्प बॉक्स तुमको देख दिखाई किसी गुड़ाए थीम गुड़ाक दिखाई तार आंसर आम करवा। तो पिला माने पैराग्राफ 1 रे को कथा आमे कहले ना स्टडीज कथा तांकर आमे आलोचना करछंदी, तो स्टडीज हे जीवो। पैराग्राफ 2 रे आमे पनिशमेंट आ हेडमास्टर को कथा नै कि आछंदी। पैराग्राफ 3 रे आमे गेम्स कथा कहछंदी। पैराग्राफ 4 रे रिवार्ड कथा कहैछि। पैराग्राफ 5 रे हैंडराइटिंग कथा से कहछंदी। पैराग्राफ 6 रे सब्जेक्ट आ टीचर को अफेक्शन कथा कहैछि। आ पैराग्राफ 7 रे टीचर को कथा कहैछि। ठीक अछि, ये होछि तमरा आंसर हे जीवो। क्लियर तो हे जाय। तापर लेट्स एनरिच आवर वोकाबुलरी। वोकाबुलरी वर्ड विषय आम टिके जानिबा। तो कहिछि नोटिस द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस बिलो। अंडरलाइन रे कोन कोन नोटिस अछि रे अनबियरेबल अछि, तो कोन बाय नोटिस करिबा देखो। व्हेन आई मेरिटेड और seemed to the teacher to merit a review it was unbearable for me। एठी कहिछि the word begins with on which is a prefix added to the word bearable। bearable रे गोटे prefix add हेछि on। ठीक अछि, हेकि unbearable हेछि। ठीक अच्छे हेछि तो तापर कोन ना प्रीफिक्स इज अ लेटर और ए ग्रुप ऑफ लेटर। प्रीफिक्स टा गोटे लेटर बा गोटे ग्रुप ऑफ लेटर हे पारे एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। आर अर्थ कोन ना ये जो प्रीफिक्स टा गोटे लेटर किबा ग्रुप ऑफ लेटर हे थाई पारे जोटा कि गोटे वर्ड सहित ऐड हे कि तार मीनिंग टा को चेंज कर दिए। ठीक अछि, जेमिति तुम एट देखि पाबो अनबियरेबल मींस नॉट बियरेबल। सो on is negative prefix and when it is added to a word the new word convey opposite meaning। तो on टा होची गोटे नेगेटिव प्रीफिक्स, एटा जते बेले अन्य गोटे वर्ड सहित ऐड हबो तार मीनिंग टा को से अपोजिट कर दबो, बिल्कुल उल्टा कर दबो। चलो चलो देखिबा क्वेश्चन कोन अछि रिगार्डिंग। सो हाउ द फॉलोइंग वर्ड्स आर बिल्ट अप ऑफ देयर प्रीफिक्स एंड रूट्स। एठी जो वर्ड गुडा को दियाइ छै वर्ड गुडा को केमिति तार प्रीफिक्स बा रूट रु तयारी हेछि सेटा देखा बोली कहछि। गोटे एग्जांपल दे दै छै डिस ओबीडिएंट, जेमिति एटा अछि डिस युक्त ओबीडिएंट बोली कहछि। से बळे अबनॉर्मल रे कोन हबो अब हे जीवो तमरा कोन ना प्रीफिक्स, नॉर्मल हे जीवो रूट वर्ड। डिमेरिट रो डी होछि प्रीफिक्स आ मेरिट होछि रूट वर्ड।
डिसअपियर रो डिस होची प्रीफिक्स, अपियर होची रूट वर्ड, इलिजिबल रो इल होची कोन प्रीफिक्स आ एलिजिबल लेजिबल होची कोन ना रूट वर्ड, इम्पॉसिबल रो आई एम प्रीफिक्स एंड पॉसिबल होची रूट वर्ड, इंट्रांजिटिव रो इन होची प्रीफिक्स एंड ट्रांजिटिव होची तमरो रूट वर्ड, मिस अंडरस्टैंड रो मिस आ अंडरस्टैंड, अनलकी रो ऑन होची प्रीफिक्स, लकी होची रूट वर्ड। बुझी पाला ना, आराम से कर दबो, एतरे किछि नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हमें, rewrite the following sentences replacing the underlined word by single word with their opposite or negative meaning। कोचे एठी किछि सेंटेंस दिया आइछि, सेंटेंस टाको पुनी थरे लेख, जो अंडरलाइन वर्ड देछि ताको गोटे नेगेटिव मीनिंग बा ऑपोजिट मीनिंग रे कोन ताको कन्वर्ट करके लेख बोली कहिछि। जेमिति हमें देखिले ऊपर गोटे एग्जांपल देछि, देखो स्वरूपास अचीवमेंट इज नॉट बिलीवेबल, नॉट बिलीवेबल जगह हमें अनबिलीवेबल लगे परिबा, ठीक अछि। विश्वास योग्य नुह, अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल, सिंपल, स्वरूपास अचीवमेंट इज अनबिलीवेबल। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन को जीवा, रिमोट ट्राइबल एरियाज अमंग हिल्स एंड फॉरेस्ट्स आर नॉट स्टिल रीचेबल, नॉट स्टिल रीचेबल, अनरीचेबल। आंसर हिजिबो कोन ना रिमोट ट्राइबल एरियाज अमंग हिल्स फॉरेस्ट्स आर स्टिल अनरीचेबल, राइट, अनरीचेबल हिजिबो आंसर। द यंगर जनरेशन इज नॉट इंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड इन ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन, तो आंसर हिजिबो कोन रे पिला माने अनइंटरेस्टेड। इजी जिंस गुडा तुम प्रैक्टिस दरकार, ग्रामर जिंस प्रैक्टिस ही हे परिबो। ओके, द स्ट्रेंजर डिड नॉट टॉक इन अ पोलाइट मैनर, नॉट टॉक इन अ पोलाइट मैनर, इम्पोलाइट हिजिबो, नॉट पोलाइट, इम्पोलाइट, ठीक अछि। मेनी पीपल आर नॉट हैप्पी, अनहैप्पी, ओके। नॉट एक्टिव, इनएक्टिव। नॉट लिमिटेड कोन हिजिबो अनलिमिटेड, लिमिट जदि किछि नाही ताले अनलिमिटेड। क्लियर तो आउ आंसर गुडा तो माने आराम से करि परिबो। पीडीएफ को डाउनलोड करि परिबो, पीडीएफ को डाउनलोड करिया पय ओडिया स्टडी गाइड एप्लीकेशन को जाओ, व्यस्त होबार नाही, सेठी तमन को सब पीडीएफ मिल जिवो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हमें बी डबल आईटा कोन अछि, दे आर नॉट मैनेजिंग, नॉट मैनेजिंग दैट हिजिबो कोन ना मिस मैनेजिंग हिजिबो, लक्ष्य करो। तापरे नॉट मोटिवेटिंग, नॉट मोटिवेटिंग डाकू तम मान लिखि परिबो डीमोटिवेटिंग बोली लिखि परिबो। नेक्स्ट रहला नॉट बिहेव, नॉट बिहेव टाइट हिजिबो मिसबिहेव्ड, राइट। तापरे नॉट मोर्टाल टा हिजिबो इमोर्टाल, राइट। तो ये होची तमरा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हमें आई सेक्शन को, लेट्स लर्न लैंग्वेज, किछि ग्रामर जिंस देछि ताको हमें पढिबा। एक्समाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, किछि सेंटेंस देछि ताको हमें प्रथमे आलोचना करिवा, तापरे हमें आगु बढ़िबा, क्वेश्चन कोन रहिछि ता रिगार्डिंग हमें आलोचना करिबा। बिफोर आई रीच्ड द स्कूल द बॉयज हैड ऑल लेफ्ट, एटी कोन हेछि ना द सेंटेंसेस टू क्लॉजेस, गोटे होछि एटा आ गोटे होछि एटा, ठीक अछि। बोथ आर इन पास्ट, one of them is in the simple past and the other is in the past perfect। दी जगह past रे अछि, गोटे अछि simple past रे I reached the school अछि, ठीक अछि। the boys had left होछि तमरा past perfect tense रे अछि, tense revisited रे हमें पढिचंती या परे आलोचना मध्ये करचंती, राइट। the two events stated in the two clauses took place in the past but at different points of the time, अलग अलग टाइम रे दी जगह घटिछि। One took place earlier than the other, the following diagram will help you understand it better। कौन कहछि ना ए जो दीटा तमे सेंटेंस देखुछ, दीटा क्लॉज देखुछ, एठी दीटा समय रे दीटा घटना घटिछि, गोटे अन्य गोटे घटनार पूर्वरु घटिछि आ गोटे ता परे घटिछि। जेमिति कि देखो ए जो सेंटेंस दीटा को हमें जदी डिवाइड कर दबा, द बॉय हैड ऑल लेफ्ट, ये होछि अर्लियर पास्ट माने आगो घटि जाइथिबा घटनाटा। रिसेंट पास्ट आई रीच्ड द स्कूल माने प्रथमे पिला माने पळै थिले, प्रथमे तापर मु जाकी स्कूल रे पहुंचली, तो रिसेंट पास्ट हे गेला कि आई रीच्ड द स्कूल, आ अर्लियर पास्ट हे गेला कि द बॉय हैड ऑल लेफ्ट। तो एठी तमे लक्ष्य करि पारछो, मु जेतेबेले तमु कोन टेंस रिविजिटेड पळै थिली, सेतेबेले तमु गोटे कथा कहिथिली जे जो अर्लियर पास्ट ता थिबो सेठी हमर कोन हबो ना पास्ट परफेक्ट यूज हबो, रिसेंट पास्ट ता जोडा सेठी पास्ट सिंपल को हमें यूज करू, ठीक अछि। तो ए अनुसार हमें देखिबा कोन क्वेश्चन रहिछि, that there is such another sentence in paragraph 3 of the text, can you find it out। obviously सेठी गोटे सेंटेंस हमर paragraph 3 रे अछि कोन, I told him what he had happened, what had happened, एटा होछि earlier action, what had happened I told him ए होछि recent action। I told him टा होछि तमर कोन ना recent action, आ earlier action कोडा हिजिबो ना what had happened, ठीक अछि। क्लियर। earlier action एठू ए जो पूरा सेंटेंस टारे I told him होछि तमर recent action, आ व्हाट हैड हैपेंड होछि तमरो अर्लियर एक्शन। क्लियर तो पिला माने। तो या पर गोटे तमरो अछि क्वेश्चन,
fill in the sentence below using the correct form of the verbs given in the bracket. One is done for you. गोटे हे जाइछि आ बाकी गुडा को हमें करेक्ट फॉर्म कोटा कोठी कोन लागिवो ताको हमें पकेबा. All guests had arrived. Arrive थिला, arrive रो had arrived जाइछि before the party started. पार्टी स्टार्ट हवा पूर्वरु सब गेस्ट पहुंच सारथिले. तो एठी प्रथमे कोन हेछि ना अर्लियर पास्ट कोडा ना द पार्टी स्टार्टेड माने अर्लियर तो नुह अर्लियर पास्ट हे जिवो हैड अराइव्ड जो ऑल गेस्ट हैड अराइव्ड प्रथमे पहुंचले ना तापर पार्टी स्टार्ट हैला तो रिसेंट पास्ट होछि कोडा ना पार्टी स्टार्टेड राइट से बळे हमें यूज करिवा. देखो वी डैश सीट अछि ब्रैकेट रे फॉर लंच आफ्टर मदर डैश फ्राई द एग्स. ठीक अछि एठी कहलो मते अर्लियर पास्ट कोडा हिथिबो प्रथमे अंडा भजा हिथिबो ना प्रथमे हमें खाइ बसतिबा प्रथमे अंडा भजा हिथिबो तापर हमें खाइ बसतिबा. तो रिसेंट पास्ट होछि के ना एटा वी डैश फॉर लंच आफ्टर मदर सॉरी लंच तो एठी कोन जो सीट टा कोन जो पिला ने स्टार्ट हे जिवो राइट आ फ्राई टा एठी हेड फ्राइड हे जिवो. क्लियर तो पिला माने. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन महात्मा गांधी डैश पास अवे इंडिया डैश अचीव हर फ्रीडम. ठीक अछि एठी कोन हबो देखो एठी कोन हे जिवो पास अवेटा पास डा अवे हे जिवो इंडिया अचीव्ड हर फ्रीडम हे जिवो हैड अचीव्ड हर फ्रीडम जोरा कि हमर अर्लियर पास्ट ओके. तापर महात्मा गांधी मरथिले ना हमर फ्रीडम पाइला पर महात्मा गांधी मरचंदी. क्लियर. नेक्स्ट जीवा कांसेप्ट बुझो जोटा प्रथमे घटिथिबो सेठी हमें कोन यूज करिवा पास्ट परफेक्ट को यूज करिवा जोटा रिसेंट घटिथिबो माने सेकंड प्रथमे गोटे घटनाटा घटी सारला तापर जो घटनाटा घटिथिबो सेठी हमें पास्ट सिंपल को यूज करिवा. ओके जेमिति द ट्रेन डैश लीव बिफोर द डैश रीच द स्टेशन. ठीक अछि स्टेशन रे पहुंचिया पूर्व से माने ट्रेन टा छाड़ी छाड़तिला तो हेड लेफ्ट हे जिवो बिफोर दे रीच्ड द स्टेशन. एबे से पूरा क्लियर हे जाइछ मन तमरो. नर्मदा डैश पोस्ट द लेटर आफ्टर सी डैश राइट इट कोन जिवो पोस्टेड द लेटर आफ्टर सी हैड राइटन इट माने आगो लेखिला तापर पोस्ट कला ना बुझि बार नै. द पेशेंट डैश डाई बिफोर द डॉक्टर डैश द डॉक्टर आसिया पूर्व पेशेंट टा मरि सारतिला तो प्रथमे कोन हेतिला कामटा हेड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम कामटा केम हे जिवो पास्ट सिंपल राइट. तापरे द फार्मर डैश प्लग द फील्ड बिफोर ही डैश सीड्स सॉ देछि तो कोन प्लग प्रथमे से हळ बंदा बंदी जहा किछि सजा सजी करे ना हेड प्लग्ड हे जिवो प्रथमे तापरे से मंजी बुणे राइट. ही बॉट द सीड ही सॉड द सीड राइट. नेक्स्ट द प्राइजेस डैश वी गिव लॉन्ग बिफोर द कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट. तो प्रथमे कोन करा जाय कल्चरल माने प्रोग्राम ता तो पर स्टार्ट हुए प्राइजेस हैड बीन गिवन लॉन्ग बिफोर प्रथम प्राइजेस दिया था तापर कल्चरल स्टार्ट हुए. ठीक अछि नेक्स्ट बुझि पारलो. 2 नंबर को जीवा लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बोली कहछि कि सेंटेंस देछि से सेंटेंस को देखो बोली कहछि देखिबा टिके कोन अछि. इफ आई हैड नॉट एक्वायर्ड द लिटिल संस्कृत दैट आई लर्नड देन आई शुड हैव फाउंड इट डिफिकल्ट टू टेक एनी इंटरेस्ट इन आवर सेकेंड बुक्स हे जिवो स्कूल बुक्स नो सेकेंड बुक्स. तठी जो गांधी जी कहिथिले जदी मु टिके जो संस्कृत जानिछि सेतिको जदी मु सेते बेले न जानि थांती ताले मु हमर जो सेकेंड हमर जो पवित्र ग्रंथ गुडा को पढि पार न थांती बा ग्रंथ गुडा करे मोर इंटरेस्ट आसी न था. द सेंटेंस हैज टू क्लॉज दीटा क्लॉज अछि. वन इज इफ क्लॉज और कंडीशनल क्लॉज एंड अदर इज मेन क्लॉज. दीटा क्लॉज अछि कोटे देखो इफ आई हैड नॉट एक्वायर्ड एटा होछि इफ क्लॉज हमर मेन क्लॉज एठी कोन हमर दी प्रकार क्लॉज अछि कोटे होछि इफ क्लॉज आ कोटे होछि मेन क्लॉज. ताले स्ट्रक्चर टा कोन अछि हमर केमिति का अछि ना इफ तापर रहला हमर सब्जेक्ट आई अछि ना कि तापर हेड नॉट देखो हेड नॉट अछि राइट. तापर वर्ब रो थर्ड फॉर्म एक्वायर्ड अछि एक्वायर रु एक्वायर्ड अछि. ठीक अछि तापर आ बाकी जिंस हमर जहा अछि से बळिया आ गोटे टाइप रो तमे कहि परिबो जे सब्जेक्ट शुड हैव आ वर्ब रो थर्ड फॉर्म ए बळिया मध्ये तमे कहि परिबो. जेमिन देखो आई शुड हैव फाउंड इट डिफिकल्ट टू टेक एन इंटरेस्ट इन आवर सेकेंड बुक्स. क्लियर. दीटा क्लॉज रो स्ट्रक्चर जानि पारलो मेन क्लॉज रो कोन हमर इफ क्लॉज रो राइट. तो देखो we use such type of conditional sentences to talk about impossible imaginary events in the past. ठीक अछि पास्ट रे जोटा कि impossible थिबो बा imaginary थिबो ता ऊपर कथा हला को हमें if clause को यूज करू. ताले the real meaning of two parts of the sentence is I acquired the little Sanskrit and I did not find any difficulty. अब बाकी जहा अछि this condition is called unreal condition ना कि real नो imaginary condition ता थिला
तेणु करके आम ये इफ क्लॉज रो यूज कर राइट। तो देखिबा आकु नै क्वेश्चन कोन अछि रीड द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड राइट एन इफ सेंटेंस फॉर ईच। ठीक अछि ए सिचुएशन को पढ़ो आ यार गोटे इफ सेंटेंस लेखो बोली कहिछि कोन से सिचुएशन। नोट दैट एन अफर्मेटिव सेंटेंस इज टर्न्ड इनटू नेगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस इनटू एन अफर्मेटिव सेंटेंस। आल्सो यू कैन यूज एनी ऑफ द मॉडल्स would, should, could, might in the main clause। से कहछि कोन ना अफर्मेटिव टा नेगेटिव हे परिबो, नेगेटिव टा अफर्मेटिव हे परिबो, ता छडा हमें किछि मॉडल को मध्ये यूज करि परिबा जोडा कि would, should, could और might एगुडा को हमें मेन क्लास रे यूज करि परिबा। तो गोटे हम पई कर देछि तापर हमें नेक्स्ट करिबा they did not start early they missed their train। कोन बा इफ क्लॉज लगेले if they had started early they would not have missed their train। ठीक अछि देखो अफर्मेटिव टा नेगेटिव कराइछि, नेगेटिव टा अफर्मेटिव कराइछि ना नहीं देखो केमिति they did not start early एटा नेगेटिव थिला आको अफर्मेटिव कर देले if they had started early जदि से माने आगुआ बाहर थानते बा आगुआ स्टार्ट कर थानते they missed their train एटा थिला तमरो कोन अफर्मेटिव थिला नेगेटिव कले कोन हो they would not have missed train से माने ट्रेन टा को मिस कर न थानते। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा he did not fall into the river he was not drowned। ठीक अछि एटा को हम करिबा if he had fallen into the river जदि से रिवर रे पड़ी थांता he would have drowned से कोन बुडी जाई थांता। बुझी पाला ना नहीं कांसेप्ट टा को बुझो माने मीनिंग टा को बुझो अफर्मेटिव टा नेगेटिव, नेगेटिव टा अफर्मेटिव केमिति करके इफ क्लॉज रे यूज करा जाय राइट। आको हमें पढ़ीबा आगो को जाय कि तमरो जो अछि कंडीशनल क्लॉज सेगुडा का हमें जानिबा राइट। ग्रामर रे पढ़ीबा the sun was in the right direction the photographs came out very well। if the sun had not been in the right direction जदि sun टा right direction रे न थांदा the photographs would not have been come out photograph गुडा का भला आसी न थांदा राइट। next question I saw you I invited you to my party if I had not seen you I could not have invited you to my party ए टाइप रे हबो इफ क्लॉज लगे। ठीक अछि या हमें बेसिक रु पढ़ीबा पूरा डिटेल रे जानिबा एबे होय त तमे किछिरा जिंस बुझी पारथिबो किछिरा बुझी पार नथिबो राइट। लिलिमा on a lottery she bought a good house एटा केमि देबो if Lilima had not won a lottery she could not have brought a good house right। next question the mangoes were not ripe they did not sell at a good price if the mangoes had not been ripe they would have sold at a good price right। आराम रे सही जिंस रिपीट होउची। ठीक अछि से जो तमरो स्ट्रक्चर दीटा को मन रखि दियो बस आ किछ करियार नै ओके। नेक्स्ट Subra did not spend much she had a lot of bank balance if Subra had spent much did not थिला ना नेगेटिव थिला ताको अफर्मेटिव कलो if Subra had spent much she would not have a lot of bank balance ता पाखरे एते बैंक बैलेंस न थांदा ना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन the farmer worked hard he reaped a rich harvest if the farmer had not been worked hard he could not have reaped a rich harvest। ठीक अछि मन रहला। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हमें put the verbs in bracket into their correct form किछि verb देछि से ब्रैकेट रे से ब्रैकेट रो verb गुडो को करेक्ट फॉर्म रे हम यूज करिबा कोठी को फॉर्म लागिवो देखो if our boys had played well जोडा देछि तमर एठी our team win देथिला the match easily if clause रो यूज हेछि जदी हम पिला माने भलो खेली थांते if our boys had played well भलो खेली थांते our team would have won the match easily ना कि our team win द जो मैच देथिला would have would लागिबो would could should एउडा लगाई परिबो तमे मेन क्लॉज रे तो मेन क्लॉज एटा हमर our team win the match जो थिला ठीक अछि तापर तमर कोन लागिबो would have won हेजिबो the match easily okay। next question if Manisha not get the scholarship she might have missed the chance of her studies abroad एटा को केमिति करिबा हमें ना if Manisha had not got the scholarship she might have missed the chance of her award। ठीक अछि क्लियर ना नहीं her studies abroad। next question India have achieved her freedom if the Indians not fight for it not fight ता हमर एठी यूज करिबा एठी कोठी क्लॉज हो हमर मेन क्लॉज कोडा कहलो एटा India would not have achieved her freedom if the Indians had not fought हेजिबो for it फाइट टा फाउट हेजिबो केमिति थर्ड फॉर्म यूज हो बोली कोआला परा सब बोले थर्ड फॉर्म को लगाइबो ठीक अछि तापर देखो क्रॉप्स would have been better if it rain देछि थर्ड फॉर्म लगाइबा रेन हेजिबो राइट।
the government not be very unpopular if they had not raised taxes. The government would not have been ହେଇଯିବ ଏଠି ଆମର would should could କୋଉଟା ବି ଗୋଟେ modal use ହବ ତ would not have been very unpopular if they had not raised taxes, right? Next question, if you take my advice you would not have got into troubles. ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲା take ର taken ହେଇଯିବ okay, if you had taken my advice you would not have got into troubles, right? Next question, the glass not break ଦେଇଛି if she had not dropped it. main clause ରେ use ହେଇଛି ତ would should could ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ use ହବ ଦେଖ, the glass would not have broken if she had not dropped it, okay? Next question ଯିବା ଆମେ 3 नंबर को, fill in the blanks with correct preposition choosing from the backs. प्रिपोजिशन आम जो पढ़िया प्रिपोजिशन रे आप मध्ये आम डिटेल जानिबा एबे खाली तुम टिके टिके जानि जाओ केमिति कोन क्वेश्चन गुडा को होउची तुम प्रिपोजिशन पढ़ी सारिबो तापर आसी के जो देखिबो इजीली आखि बुझी कर दबो कोनोसी प्रकार रो तुमको हेल्प दरकार पड़िबो नाही. शी वाज डीपली असेम्ड डैश हर बिहेवियर एट द पार्टी ऑफ हे जीवो ठीक अछि. शी वाज डीपली असेम्ड ऑफ हर बिहेवियर एट द पार्टी ए भीतर बाचिया कहछि ठीक अछि. एमंग कहले दीटा जिंस भीतर जब तुम बाछिया पई चाहछो ताले एमंग हे जीवो. फ्रॉम कहले थारु ओडिया रे हम जोटा कहउछन जेमिति कि गोटे प्लास्टिक रे गोटे चेयर तयारी छि चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक कहि परिबो मेड ऑफ प्लास्टिक बा मेड फ्रॉम प्लास्टिक एमिति के तुम लगे परिबो. इन ऑन एगुडा कर पूरा एठी तो सब गुडा कर यूजेस कहिबाटा पॉसिबल नुह ऑलरेडी बहुत माने लंबा हे गलानी वीडियो त माने प्रीपोजिशन क्लास जाई वेट कर प्रीपोजिशन रो जो क्लास आसीबो सेठी डिटेल रे तमन को अमंग फ्रॉम इन ऑफ टू विथ कोगुडा को कोठी यूज होची से विषय में कहबी एबे खाली तम टिके आंसर देखिनियो. people are dash the opinion that price control are losing ground. people are of the opinion hala the festival kicked off dash traditional music and folk dances with हे जीवो हाला फेस्टिवल टा आरंभ होला का सहित with traditional music and folk dances, right? तापरे sweets were distributed among children हे जीवो हम कहिथिले among टा जदी भितरे तांको भितरे बोले सेम टाइप रा आसीबो among हबो. charities are exempted from paying tax हे जीवो. children hardly refused to obey, right? India succeeded dash winning the world cup cricket that year in winning the world cup cricket, okay? आरा डिटेल रे हमें पढिबा. the officer was convicted dash bank fraud of bank fraud हे जीवो ठीक है. the officer was convicted of bank fraud बुझियला. तो नेक्स्ट टाइम जीवा जे सेक्शन लेट्स राइट कौन देती व्हाट राइट ए पैराग्राफ अबाउट 5 to 8 सेंटेंस ऑन ईच ऑफ द टॉपिक गिवन बिलो माने किछि टॉपिक दिया छै से टॉपिक ऊपर तुम मानकु किछि पैराग्राफ लिखिबार अछि तो आराम से तुम लिखि परिबो. गांधी एज ए स्टूडेंट गांधी स्टूडेंट हिसाब रे केमिति का थिले तापर गोटे पैराग्राफ आमे पढी चंदी जहा से भितरु ही बाहर करके लिखि दे परिबा. देखो केमिति लिखिबो. गांधी एन्जॉयड द अफेक्शन ऑफ हिज टीचर्स एट स्कूल सबले टीचर को भल पाइबा से एन्जॉय करथिले. he all along got good certificates of progress and character from school. he won prizes after he passed out of second standard. he even obtained scholarship in the 5th and 6th standard. he always thanked his good luck then his merit. he obeyed the rule of the school. he never disrespected his teachers. एतिकी तमे लिखि दियो बस गोटे पैराग्राफ हे गला गांधी एज ए स्टूडेंट. एगुडा आमे ऑलरेडी पढी सारछन मु भाबुनी जे आकु अधिक आमे डिस्क्राइब करिवा, राइट? तापर आसीबा आमे गांधी हेडमास्टर का विषय रे जे कि थिले दोराबजी इदुबजी जिम्मी तांका विषय गोटे पैराग्राफ जदी लिखिबा कहबो ताले कोन लिखिबा ना दोराबजी इदुबजी जिम्मी was Gandhi's headmaster at the high school, okay? he was a disciplinarian, a man of method and a good teacher. he was very popular among the boys. he was a lover of games and gymnastics. he made the exercise compulsory for the boys of upper standard. once he ordered Gandhi to pay a fine for 1 or 2 annas for his absence in the gymnastic class. एतिक लिखले बेस बहुत किछि हे गला एगुडा को ऑलरेडी हमें पढी सारछन बुझी सारछन आ अधिक हमें टाइम नबानी आपरे. नेक्स्ट गांधी संस्कृत एंड पर्शियन टीचर ए विषय रे कोन हमें धारणा अछि हम पाठ रे ना. गांधी संस्कृत टीचर वाज ए हार्ड टास्क मास्टर. ही वाज ए कमिटेड टीचर. ही मेड हिज स्टूडेंट्स वर्क हार्ड. ही insisted the pupils to study Sanskrit. he told Gandhi to study Sanskrit for which Gandhi felt gratitude for him. On the contrary, on the other hand, Gandhi's Persian teacher was very lenient. He was very good and considerate to the pupils. He made Persian seems very easy
and also tempted the pupils to learn Persian. Okay, एतिक लिखले बस. तापरे गांधी's attitude towards sports and handwriting. Sports और handwriting ऊपर गांधी करो attitude कौन थिला? Now when Gandhi was at high school, gymnastics was compulsory for the boys, but he had not interest in it. तांकर कौन इस प्रकार interest नथिला. He had a false notation, गोटे false धारणा थिला that gymnastics and games had nothing to do with the education. Education रे कौन सी यार काम ही नहीं. But later on he realized that gymnastics and games were indispensable but open to education. माने education सहित माने ढेर सारा संपर्क रही ठीक अच्छे. तो Gandhi's handwriting was very poor and he could not improve it at school. तांकर handwriting टा बहुत खराब थिला और से स्कूल रे सेटा को बिल्कुल improve करि पार नथिले. He had a wrong idea. जे तांकर गोटे भूल धारणा थिला that it had nothing to do with education. Education से तारा संपर्क नहीं भलो handwriting रो. Later he was ashamed of his own handwriting. तापर जाय कि से निजो को निजे लज्जा मन करछंती तांकर निजरो handwriting को देखि कि when he saw the beautiful handwriting of lawyers and young men in South Africa, he saw that bad handwriting should be regarded as a sign of imperfect education. Again, he realized that good handwriting is a necessary part of education. ठीक अछि सेसर से रियलाइज करछंती जे गोटे भलो हैंडराइटिंग होची गोटे नेसेसरी पार्ट एजुकेशन रो गोटे गुरुत्वपूर्ण अंग बोली से रियलाइज करछंती. ठीक अछि सो पिलाए ये थिला तमरो क्वेश्चन आंसर रो सेकंड पार्ट. टिके स्पीडली कर देली कहीं ना ये सब जिनस गुड़ाक ऑलरेडी आम बुझी सारी एगुड़ा को आम आउ थे बारंबार बारंबार कहवाटा किसी लाभ ना तो मैंने ऑलरेडी बुझी सारे बहुत किसी जिन जानी सारे आ बाकी जो ग्रामर सेक्शन टा रहा ग्रामर रे तापाई माने डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर अच्छी से तुम ग्रामर को पढ़ले आराम से गुड़ाक कर दे पार से मुझे स्पीड अप करदेली. ओके सो आज ये मुझे नेक्स्ट वीडियो मिसिबा नुआ टॉपिक नहीं कि जाए चैनल को सब्सक्राइब कर आमर एप्लिकेशन डाउनलोड कर नब ओडिया स्टडी गाइड एप्लिकेशन अवेलेबल अच्छी गूगल प्ले स्टोर रे जाओ डाउनलोड कर दियो ये पीडीएफ मिल जाओ. ओके टेलीग्राम चैनल मध्य जॉइन करो ओडिया स्टडी रूम सर्च करके सेठी विभिन्न प्रकार तुमको इनफॉरमेशन मिल जाओ. ओके तो आज मिसिबा धन्यवाद.